Good morning, friends. So, welcome to sixth lecture of this comprehensive revision batch and sixth topic of this batch. Today, we are going to start with topic of sole proprietors final accounts. Sole proprietors final accounts. Guys, the process of financial accounting begins with business transactions being recorded in journal. From journal, those are posted in ledger. Then the closing ledger balances are summarized in the form of trial balance. And then finally, trial balance के basis पे we prepare financial statements. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड है फाइनल अकाउंट्स. इट स्टार्ट विथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस बीइंग रिकॉर्डेड इन जर्नल. अगर आपको मेरा रेगुलर बैच का पहला लेक्चर याद आ रहा है तो जहां मैंने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये अलग अलग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताए थे. तो दैट डे वी स्पोक अबाउट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, वी स्पोक अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो अपना जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो AICPA ने दी हुई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, तो इट सेज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अब इस डेफिनेशन का एनालाइजिंग तक का पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर होता है. मतलब वी स्टार्ट विथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस बीइंग टेकिंग प्लेस इन बिजनेस. We record those business transactions in journal. From journal we post them in ledger. From ledger we prepare trial balance, and then on the basis of trial balance which we prepare, we draw final accounts, financial statements. Ultimately मेरे को एक बात बताओ बेटा, कोई भी बिजनेस हम क्यों करते हैं? Why do we carry out any business? मैं स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहा हूँ, बिजनेस. बिजनेस क्यों करते हैं हम? प्रॉफिट कमाने के लिए. इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का है ना. जब मैं बिजनेस वर्ड यूज कर रहा हूं तो द इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट कमर्शियल एक्टिविटी वॉट एवर यू आर कैरिंग आउट एज इन द नेम ऑफ बिजनेस. बिजनेस बोल के जो भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तो इंटेंशन ये है कि प्रॉफिट कमाना है. तो तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी तो चेक करना ही पड़ेगा ना. एंड दैट टू टाइम चेक करना पड़ेगा. और इसीलिए अकाउंटिंग और टाइम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आता है. और अकाउंटिंग और टाइम पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि after regular intervals you should prepare financial statements, you should draw your trial balance, prepare financial statements and arrive at financial performance and financial position. And that's the reason हम जो भी कुछ बिजनेस में कर रहे हैं वो राइट पाथ पे है, कुछ गड़बड़ हो रहा है उसमें क्या हो रहा है ये समझने के लिए हर 12 महीने बाद, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में वी ड्रॉ ट्रायल बैलेंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड देयर एंड्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड वहां हो जाता है. इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है वो अलग अलग ब्रांचेस में होता है, वो आप ड्यू कोर्स में आगे सीख लोगे. अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है. तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विल बिगिन विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन जर्नल. जर्नल से शुरुआत होके फाइनल अकाउंट्स पे एंड होता है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब फाइनल अकाउंट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे 2 मिनट पहले कि बिजनेस कर ही रहे इस इंटेंशन के साथ कि अपने को प्रॉफिट होना चाहिए. तो भाई सही में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं है? अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए, ये फर्दर उसके सब इंटरप्रिटेशंस करने के लिए बेस क्या है?
फाइनल अकाउंट्स. विदाउट फाइनल अकाउंट्स की कुछ समझ में ही नहीं आएगा. And therefore, this is one of the very, very critical and important stages in financial accounting, and which happens to be the last stage as far as financial accounting is concerned. तो ये फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो हम इस टॉपिक में सीखते हैं. रिवीजन बैच में इसके ऊपर बहुत कुछ बोलने जैसा है भी नहीं. द रीजन बीइंग जो बेसिक प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग के वो तो बदलने वाले हैं नहीं. और वैसे भी सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट से सिलेबस में है. इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनाओ, बेसिक प्रिंसिपल थोड़ी बदलते. कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में फर्क सिर्फ इतना होता है कि कंपनी का स्टैट्यूटरी फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है P&L और बैलेंस शीट का, जो अपने ट्रेडिशनल फॉर्मेट से अलग है. उतना चेंज है, बेसिक प्रिंसिपल थोड़ी बदल रहे. अब हम कंपनी अकाउंट्स में कंपनी की बैलेंस शीट बनाए, तो वो बैलेंस शीट बनाए बोल तो कोई प्रिंसिपल ही थोड़ी कुछ अलग की है. सिर्फ फॉर्मेट जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो बदला है, सिर्फ प्रिंसिपल्स रिमेन सेम. तो 11th में जो फाइनल अकाउंट सीखा था वो और फाउंडेशन का सीखा हुआ कुछ अलग है. सीए में आया तो कुछ बहुत कुछ अलग हो जाता है. बिल्कुल भी नहीं, वही सब कुछ है भाई. साल के एंड में सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज करेंगे, क्लोजिंग लेजर बैलेंसेस लेंगे, रियल नॉमिनल पर्सनल सारे के सारे, उनकी समरी बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, और फिर वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाएंगे जिनमें हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. सो फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड, just to quickly understand the structure, वैसे दो कंपोनेंट्स, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तीन बना रहा हूं. क्यों तो फाउंडेशन लेवल पे सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट है जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी अलग से बनाते हैं. क्या होता है, तुम जब इसमें जाओगे कंपनी में बेटा कोई ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनता नहीं स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में. वहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है. बट अभी के लिए समझने के लिए फाइनल अकाउंट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक है ट्रेडिंग अकाउंट, another is profit and loss account, and we have balance sheet. We have balance sheet. As far as trading account is concerned, in trading account we take into consideration direct incomes and direct expenses. And guys, what is the outcome of trading account? Gross profit. As far as P&L account is concerned, indirect incomes and ultimately the outcome of P&L account is net profit. Balance sheet is summary of assets, and liabilities. As far as trading and P&L account is concerned, it will give you financial performance, and balance sheet is going to give you
अब बेटा ये रिवीजन बैच है, मैं इसमें ये बोलने में टाइम नहीं डालूंगा कि बैलेंस शीट टैली क्यों होता है, नहीं ये सब नाउ यू नो वेरी वेल, डबल एंट्री सिस्टम और ट्रायल बैलेंस वो सब तुमको मालूम है, तो अपना वो डिस्कस नहीं करेंगे. Important point you need to keep in mind, the basis of preparing final accounts is the trial balance items will be recorded by giving single effect. ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स आए उसका सिंगल इफेक्ट ही देंगे. क्यों? तो ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का कॉम्पेंसेटिंग इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के दूसरे आइटम में है ही ना, बिकॉज एवरी डेबिट हैज गॉट क्रेडिट इफेक्ट. तो कहीं ना कहीं डेबिट है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इफेक्ट उसका आया हुआ ही है. तो ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट हम एक इफेक्ट ही देख के रिकॉर्ड करेंगे फाइनल अकाउंट्स में. अगर डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम है तो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, एसेट या लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा. तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का आई थिंक देर इज फुल फुल प्रूफ क्लैरिटी इन योर माइंड. उसमें बहुत कुछ अपन डिस्कस करें ना, अभी टाइम डाले ऐसे मेरे को जरूरत नहीं लगती. ऑब्वियसली ये जो मैं तुम्हारे सामने अभी प्रेजेंटेशन किया हूँ ना बेटा, ये आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स. हाँ, लेट देयर बी नो कंफ्यूजन. क्यों? तो किसी के तो भी माइंड में आएगा सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है बट वो मैन्युफैक्चरर्स के केस में, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं. आज टाइम परमिट करता है तो आज ही करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है. तो उनके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट का आउटकम जो ग्रॉस प्रॉफिट है वी टेक इट टू पी एंड एल अकाउंट. देन पी एंड एल अकाउंट का आउटकम आता है नेट प्रॉफिट, वी कंसिडर इन बैलेंस शीट इन कैपिटल. प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, लॉस है तो लेस करते हैं, एंड देन वी सी द बैलेंस शीट इज टैलिड. So these are the components of sole proprietor's final accounts, wherein trial balance items will be given single effect. But when it comes to adjustments, let's quickly understand what do you mean by adjustments. Adjustments का मतलब क्या? तो adjustments means unrecorded transaction for the same accounting year for which you are presenting final accounts. जिस अकाउंटिंग ईयर के फाइनल अकाउंट्स आप बना रहे हो उसी अकाउंटिंग ईयर के वो ट्रांजेक्शन्स है बट वो अनरिकॉर्डेड है. एंड बिकॉज दोज आर अनरिकॉर्डेड एंड बिकॉज दोज बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड जिसके फाइनल अकाउंट्स बन रहे, आपको उनको फाइनल अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज दोज बिलोंग टू दैट पीरियड ओनली, उसी पीरियड के वो है, तो उनके इफेक्ट्स अपने को उसमें लेने हैं. तो those are unrecorded transactions of the same accounting period and those need to be incorporated in final accounts and therefore those are recorded by giving two effects. क्यों? तो वो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने हैं तो ऑब्वियसली दो इफेक्ट तो देने ही पड़ेंगे ना, रिकॉर्डिंग करना है तो, बिकॉज जो अकाउंटिंग है वो तो डबल एंट्री के अंडर ही हो रहा है. तो दैट्स द रीजन एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट दिए जाते हैं. वापिस एक बार बोलता हूँ, ट्रायल बैलेंस में आए हुए आइटम का सिंगल इफेक्ट इसलिए है कि तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसका तुरंत कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट इफेक्ट भी आया हुआ है. डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट में आया हुआ ही है क्यों? तो वो अकाउंटेड है ऑलरेडी. लेकिन जो एडजस्टमेंट्स है वो अनरिकॉर्डेड है, अनअकाउंटेड है, जिनका अकाउंटिंग अपने को करना है, एंड दैट्स द रीजन दोज आर रिकॉर्डेड बाय गिविंग टू इफेक्ट्स. दो इफेक्ट्स दिए जाते हैं. अब अलग अलग एडजस्टमेंट्स है. मैंने रेगुलर बैच में जहाँ तक याद आते 13-14 अलग अलग एडजस्टमेंट्स लिखा के दिए आपको, सारे इफेक्ट समझाए. मुझे नहीं लगता कि अभी वो सारे इफेक्ट्स अपने को डिस्कस करने की ज़रूरत है. 11 स्टैंडर्ड से अभी तो कॉमर्स में अगर हो तो वही करते आए हो, नया कुछ नहीं है. मेरे को लगता है कि वी विल डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट अपने एक एक करके समझेंगे. सारे जो भी प्रॉब्लम्स मैंने कवर किए रिवीजन में, सारे रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम्स है, तो उसमें मेजोरिटी या ऑलमोस्ट सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कवर होने वाले हैं. बस वो एडजस्टमेंट के इफेक्ट अपने को समझने, तो प्रॉब्लम के सॉल्विंग के साथ साथ में अपन वो समझ लेते हैं. तो सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनने वाला है अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है? तो ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. राइट. ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा, एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहेंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का सिंगल इफेक्ट देंगे, और जो एडजस्टमेंट्स रहने वाले, बिकॉज दोज आर अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनल अकाउंट्स, वी विल बी गिविंग टू इफेक्ट्स. तो उनके दो इफेक्ट्स देने हैं. क्लियर है? यस. कम टू पेज नंबर 10th.
Problem number 1. First problem. The following is the trial balance of Messrs. Thomas and Associates on 31st March 2025. Capital, drawings, fixed assets opening, fixed assets additions. Opening stock, purchases, purchase returns, sales, sales returns, debtors, creditors, expenses, fixed deposits with bank, interest on fixed deposit, bank overdraft, suspense account, rent 17 months up to 31st August 2025, investments 12%, 1st August 2024 को किए हुए इन्वेस्टमेंट्स है, बैंक बैलेंस. Stock on 31st March 2025 was valued at 7,50,000. Depreciation is to be provided at 10% per annum on fixed assets purchased during the year. A scrutiny of books of accounts revealed the following matters. Rupees 1,50,000 drawn from bank was debited to drawings account. But out of this amount withdrawn, rupees 90,000 was used in business for day-to-day expenses. Purchase of worth rupees 1,20,000 was not recorded in the books of accounts up to 31st March 2025, but the goods were included in stock. Purchase returns of 7,500 was recorded in sales return journal and the amount was correctly posted to the party's account on correct side. Expenses include 45,000 in respect of period after 31st March 2025. Give necessary journal entries in respect of 1 to 4 and prepare the final accounts for the year end date 31st March 2025. Very unique sum, बहुत यूनिक सम है. इसमें ना एडजस्टमेंट्स ऐसे स्ट्रेट एडजस्टमेंट्स नहीं दिए, एरर्स के फॉर्म में दिए और अपने को बोल रहे वो एरर्स के जर्नल एंट्रीज भी करो, रेक्टिफाई भी करो. आप देखोगे तो बेटा ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है, फाइनल अकाउंट्स के सम में ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस नहीं आता. बट ये दिया है मतलब क्या है, इन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड फाइनल अकाउंट दोनों कंबाइन कर दिया साथ में. तो अब आपको रेक्टिफिकेशन के इफेक्ट्स पहले देने पड़ेंगे, जर्नल एंट्रीज भी पूछे वैसे भी वो करके फिर फाइनल अकाउंट बनाने का है. तो वेरी यूनिक सम है, बहुत अच्छा सम है. चलो साथ में सॉल्व करते हैं. Problem number 1, page number 10. In the books of Messrs. Thomas and Associates, in the books of Messrs. Thomas and Associates, journal entries. Journal entries. चार ट्रांजेक्शन दिए हुए बेटा, वो चार ट्रांजेक्शन्स अपने को अकाउंट फॉर करने हैं, चार एंट्रीज है.
स्टार्ट। चार ही एंट्रीज है, अकॉर्डिंगली फॉर्मेट बनाए। पहला क्या दिया हुआ है नीचे एडजस्टमेंट्स में, ₹1,50,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक वॉज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स, बोल तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए थे, बट आउट ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉन ₹90,000 वॉज यूज इन बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंस। तुमने पूरा की पूरा ड्राइंग रिकॉर्ड करके रख दिया है, पूरा पूरा ड्राइंग्स, बट 1.5 लाख के ड्राइंग नहीं थे, उसमें से 90,000 तो बिजनेस का खर्चा हुआ है, तो वो तो फिर एक्सपेंसेस को डेबिट होना चाहिए था, बट अभी कहाँ डेबिट हुआ है ड्राइंग्स को। फिर अब रेक्टिफिकेशन क्या करूं, डेबिट होना चाहिए था एक्सपेंसेस को, डेबिट हो गया है ड्राइंग्स को, तो क्या करूं एंट्री, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। $90,000 to drawings account, being expenses paid out of drawings, being expenses paid out of drawings। सेकेंड एरर क्या हुआ है, purchases of goods worth ₹1,20,000 was not recorded in the books of account up to 31st March, but the goods were included in stock। गुड्स परचेस हो गए थे, स्टॉक में भी आ गए अपने क्लोजिंग स्टॉक में, उसकी एंट्री करनी रह गई, परचेसेस की रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब रिकॉर्ड कर लो, क्या एंट्री करेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 to creditors account, suppliers account, $1,20,000, being purchase of goods accounted, being purchase of goods accounted, then purchase returns of 7,500 was recorded in sales return journal and the amount was correctly posted to parties account on the correct side। परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होनी चाहिए, कस्टमर नहीं, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। गलती से ये सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड हो गया, सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट हो गया ये गलती से, और वहां से ना पार्टी के अकाउंट में करेक्ट इफेक्ट दिया बोल रहा है, मतलब पार्टी को भी डेबिट देना था तो डेबिट ही दिया है, मतलब दोनों इफेक्ट डेबिट गए, क्रेडिट गया ही नहीं, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट, नो क्रेडिट, बराबर। रॉन्ग एंट्री ये थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। फिर अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ,
क्या बोला समझा कुछ? अबे थोड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, थोड़ा आराम से बोल। वही बोला वो भी वही बोला। सप्लायर्स नहीं बोला उसने, सस्पेंस ही बोला ना। सस्पेंस ही बोला। हाँ। तो इतने फास्ट बोलता ना, तो क्या बोलता समझता नहीं। बोलेगा किसी और को, सुनेगा कोई और, प्रॉब्लम नहीं से हो जाएगा, और कुछ नहीं। तेरे को बोलना रहेगा किसी और को कुछ, कोई और कुछ समझ लेगा, और वो कुछ और समझने में और कुछ कुछ हो जाएगा। वापिस एक बार बोलता हूँ भाई लोग, अपना रेक्टिफिकेशन का टॉपिक हो गया है, रिवीजन भी हो गया है। वेदांत सारे इंटरेस्ट तो बताएगा, बाकी सब शांत रहेंगे। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? इसलिए मैं जब बोलता हूं ना, तो मेरे साथ में बोलना चाहिए। 2 बार समझा चुका हूं, अभी के अभी 2 मिनट पहले। उसके बावजूद बोलने नहीं आ रहा अपने को। 2 मिनट भी नहीं हुए मेरे को बता के। कम से कम जो सुना है वो तो भी बोलने आना चाहिए ना। डे 1 से बोल रहा हूं कि क्लास में आंसर दे, क्लास में आंसर दे, तो वो आएगा। मैंने देखा किसी बोले जैसा कुछ तो करता, वो फुट 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 बच्चे करते ना, वैसे आंसर देता ही नहीं। एग्जाम में मैं आके बैठने वाला हूं क्या बाजू में? द करेक्ट एंट्री शुड बी पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न्स अकाउंट. Wrong entry past is party account debit, sales return account debit, no credit. Rectification entry will be suspense account debit 15,000 to purchase return 7,500 to sales return 7,500. अच्छा, ये एरर इसके पहले कम से कम 25 बार हो गया, 25 बार। कम से कम 25 बार हुआ है, रेगुलर बैच और रिवीजन बैच मिला के। बार बार कराया हुआ है ये। घर पे क्या गोटे खेलते क्या बे? 1 महीना रहा नहीं एग्जाम को, 3 दिन पहले सिखाया हुआ है, बोलने नहीं आ रहा। बोलो रेक्टिफिकेशन एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 7,500 टू सेल्स रिटर्न्स being rectification of wrong debit given to sales return account. अब देख सकते हो कि सस्पेंस टैली हो गया।
ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैलेंस कौन सा था? क्रेडिट था। अभी ये डेबिट कर दिए इस एंट्री में, तो टैली हो जाएगा। और वैसे भी एरर्स रेक्टिफाई होने के बाद सस्पेंस टैली होना चाहिए, तो अब बैलेंस शीट में आएगा क्या सस्पेंस? लास्ट एरर, एक्सपेंसेस इंक्लूड 45,000। एरर नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। एक्सपेंसेस इंक्लूड 45,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर 31 मार्च, मतलब प्रीपेड है। आपको सिखाया हुआ है व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना अमाउंट है वो? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट 45,000 45,000 being prepaid expenses accounted being prepaid expenses accounted। हो गया, फिनिश्ड। जर्नल एंट्रीज हो गए। अब अपने को फाइनल अकाउंट बनाने हैं। Messrs Thomas and Associates, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2025। बहुत कुछ नहीं है बेटा, हाफ पेज विल बी सफिशिएंट, या मोर देन हाफ पेज, एक दो चार लाइन ज़्यादा। बैलेंस शीट just for 8 lines।
बैलेंस शीट एज एट 31st March 2025. Liabilities rupees, assets rupees. सर ट्रायल बैलेंस में चेंजेस करने होंगे ना अभी रेक्टिफिकेशन इंटरेस्ट के बाद? हाँ तो हो जाएंगे ना वो। ट्रायल बैलेंस बनाने को थोड़ी बोला है अपने को वापस से, अपन वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे फाइनल अकाउंट्स। करें स्टार्ट। हम्म The following is the trial balance of Messrs. Thomas and Associates on 31st March 2025. Capital. Go to liability side, capital. Inner column, 45 lakhs. Drawings. We deduct the drawings from capital. But when you take the amount of drawings, be careful. हमने drawings में एक rectification किया है. ड्राइंग्स की अमाउंट दी हुई कैलसी पे लो 5,25,000 माइनस कितने खर्चा था जो बिजनेस के एक्सपेंसेस थे, बोलते एक्चुअल में ड्राइंग्स कितने, 4,35,000 ही है तो उतना ही लेस होगा. बैलेंस इन इनर कॉलम ओनली. 40 lakhs 65,000. Keep one line blank for profit or loss. Fixed assets. इनर कॉलम ओपनिंग कितने थे, 10,50,000. एडिशंस ₹15,00,000. इनर कॉलम में सब टोटल 1 line blank for depreciation. Opening stock, trading account, to opening stock 4,50,000. Purchases, रुक जाओ, ओरिजिनली दिए हुए परचेसेस कितने, 1,20,00,000. ऊपर जो एंट्रीज पास किए उसमें देखो सेकेंड एंट्री में आपने परचेस को डेबिट किया है और 1,20,000 क्यों, तो ये अनअकाउंटेड थे तो अब वो हमने अकाउंट फॉर कर लिए.
तो अब परचेसेस कितने हो जाएंगे? 1 करोड़ 21 लाख, 1 करोड़ 21 लाख 20 हजार, बरोबर। 1 करोड़ 21 लाख 20 हजार। परचेस रिटर्न्स लेस कर दो, लेस रिटर्न्स, रुक जाओ। ओरिजिनली दिए हुए रिटर्न्स 517,500 है, और अभी हमने रेक्टिफिकेशन में परचेस रिटर्न ऐड किए, क्रेडिट किए, कितने? बोल तो कितने हो जाएंगे? 5,25,000। 1 crore 15 lakhs 95,000, करेक्ट? बाय सेल्स 1 crore 65 lakhs, 1 करोड़ 65 लाख, लेस रिटर्न्स। इसमें एडजस्टमेंट था, कितने दिए रिटर्न्स? लो कैलसी पे 742,500, बट इसमें बेटा 7,500 गलत ऐड हुए थे, जो हमने वो सस्पेंस वाले एंट्री में रिवर्स कर दिए, माइनस 7,500। बोल तो एक्चुअल में रिटर्न्स कितने हैं? 735। 1 crore 57 lakhs 65,000, 1 करोड़ 57 लाख 65 हजार आया। फिर डेटर्स, बैलेंस शीट डेटर्स, कोई एडजस्टमेंट है इसमें? नहीं है ना? डायरेक्टली आउटर कॉलम ले लो। 18,75,000। क्रेडिटर्स, आई थिंक क्रेडिटर्स में तो एडजस्टमेंट है। हमने रेक्टिफिकेशन में ऐड किए ना, वो जो अनरिकॉर्डेड परचेसेस थे वो रिकॉर्ड किए ना हमने। हम्म ओरिजिनली दिए हुए क्रेडिटर्स है 16,50,000, और वो 1,20,000 के अनरिकॉर्डेड परचेसेस थे, तो कितने हो गए? 17,70,000। एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में एक 3-4 लाइन छोड़ो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वगैरह। टू एक्सपेंसेस, नहीं रुको, टू एक्सपेंसेस ओरिजिनली, ओरिजिनली 4,80,000 दिए, फिर हमने ड्राइंग्स में से किए हुए 90,000 वापस एक्सपेंसेस को डेबिट किए, तो कितने हो गए? 5,70,000, इनर कॉलम में लो, 5,70,000 लेस प्रीपेड। प्रीपेड भी किए ना लास्ट इसमें, वो कितने? 40। आउटर कॉलम 5,30,525, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस 40 आया।
Fixed deposit with bank, asset side. Fixed deposit with bank 15 लाख. Then इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कहाँ लेंगे? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पी एंड एल अकाउंट, एक लाइन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए छोड़ो, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. बोलो बेटा. 1,50,000. बैंक ओवरड्राफ्ट हम्म 60. सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया है, नहीं आएगा वो. रेंट डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है. बोल तो एक्सपेंस है ये. पी एंड एल अकाउंट में आओ, टू रेंट, इनर कॉलम 1,27,500. बट ये 17 महीने का है बेटा, 31 अगस्त तक, मतलब अगले साल का 5 महीने का प्रीपेड है ये. लेस प्रीपेड कैलसी पे लो, 1,27,500 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 5, 37. सो आउटर कॉलम 90,000, आउटर कॉलम 90,000. कहाँ पे लेंगे उसको? प्रीपेड रेंट कितना? 37,500. 12% इन्वेस्टमेंट्स किधर? एसेट साइड में 12% इन्वेस्टमेंट्स. $18,75,000. बेटा हिडन एडजस्टमेंट है उसमें. कब किए इन्वेस्टमेंट्स? 1 अगस्त 2024 को. तो 1 अगस्त 2024 को अगर किए तो 1 अगस्त के आगे 31 मार्च तक का उसका इंटरेस्ट आना चाहिए. कितने महीने होते हैं? 8 महीने हो रहे. अब 8 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए, बनता कितना है? 18,75,000 पे 12%, 8 महीने के लिए 1,50,000. अब कहीं पे भी दिया नहीं वो मिला है बोल के. ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है ना वो फिक्स डिपॉजिट का है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है. तो अब ये पूरा पूरा एक्रूड है. पहला इफेक्ट, पी एंड एल अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स. बरोबर है क्या? बोलो. 1,50,000. कैलकुलेशन दिखाना है तो ब्रैकेट में दिखा दो, वैसे जरूरत नहीं है बट दिखाना है तो दिखा दो. इन्वेस्टमेंट्स 18,75,000 इंटू 12% इंटू
go to asset side, interest accrued on investments, 1.5 lakh. Interest accrued on investments 1.5 lakh. Then बैंक बैलेंस वहीं पे एसेट साइड में, हाउ मच, 7 lakhs, 1267. हो गया. Stock on 31st March 2025 was valued at 7,50,000 rupees. It is closing stock. By closing stock 7,50,000. Balance sheet, asset side, stock in trade 7.5 lakh. Depreciation is to be provided at 10% per annum on fixed asset purchased during the year. 10% है, पर एनम है, स्पेसिफिक दिया है, तो ओपनिंग पे तो पूरे साल का आएगा. तो ये देखो, ओपनिंग के 10,50,000 इंटू 10%, 1,05,000 मेमोरी प्लस. एडिशंस कब हुए वो दिया है, डेट भी दिया है. 15 लाख के एडिशन है वो 1 अक्टूबर को है, तो 1 अक्टूबर के आगे 6 महीने होते हैं, तो आधे साल का ही डिप्रिसिएशन आने वाला है. कितना होता है वो, 75,000. तो टोटल डिप्रिसिएशन 1,80,000 लेस डिप्रिसिएशन. आया क्या सबका 1,80,000. आउटर कॉलम 23,70,000, 23,70,000. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? अब बेटा नीचे दिए हुए जो सारे एडजस्टमेंट्स थे, इन सब के इफेक्ट्स अपन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, राइट. हाँ. डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ना, हाँ. पी एंड एल अकाउंट टू डिप्रिसिएशन. एक लाख 80,000. बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स अपन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं. अब सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो. सब लोग इंडिपेंडेंटली करो, टेक योर ओन टाइम. टू ग्रॉस प्रॉफिट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. एक करोड़ 65,15,000 टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का. 1,65,15,000.
Gross profit is 44 lakhs 70,000. सबका आया? $47,70,000 is the total of P&L. Net profit 39,75. 39,75,000. Add it in capital. Outer column capital is 80/40. 98 lakh 70,000. टैली फिगर चेक कर लो एक बार बराबर. tallied at 98 lakh 70,000. आया सबका? All of you got it? हो गया? थोड़ा यूनिक सम था, अलग था. डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट क्या है ना, सडनली अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाएगा ना एकदम से, थोड़ा जम्बलिंग हो सकता है फिर कि क्या करना है. अभी सॉल्व किया हुआ है तो अब आइडिया आ गया कि क्या करना है, और सॉल्व करने के बाद ये भी समझ में आएगा कि आया कि डिफिकल्ट नहीं था. बट वो एकदम से अगर एग्जाम में आ गया तो वो 3 घंटे का प्रेशर ऑलरेडी रहता है, टेंशन रहता ही है, उसमें फिर गड़बड़ हो जाती. सेकेंड प्रॉब्लम. Charu decided to start business of fashion garments under the name of Messrs. Bella Weir on 1st April 2023. She had a saving of about 10 lakhs. She invested 3 lakhs out of her savings and borrowed equal amount from the bank. She purchased a commercial space for 5 lakhs and further spent rupees 1 lakh on its renovation to make it ready for business. Loan and interest repaid by her in the first year are as follows: 30th June 2023, 30th September 2023, 31st December 2023, 31st March 2024. In view of further capital requirements, she transferred rupees 2 lakhs from her savings bank account to bank account of the business. She paid security deposit of 7,000 for telephone connection. Furniture of 10,000 was purchased. All payments were made by check and all receipts in cash were deposited in bank. In short, cash में transactions ही नहीं है, सारे बैंक में ही है. At the end of the year, her business showed the following results: total sales, electricity expenses paid, cartage outwards, entertainment expenses, miscellaneous expenses, total purchases, telephone charges, traveling expenses, maintenance expenses, electricity expenses payable. Other information: she withdrew rupees 5,000 by check each month for her personal expenses. Depreciation on building at the rate of 5% per annum and on furniture at the rate of 10% per annum.
Closing stock in hand as on 31st March 2024, 5,50,000. Prepare a trading account, P&L account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as on that date. Yes. अब इसमें ना रेगुलर तो अपन सॉल्व ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो बन जाएगा, उसके साथ साथ में ना अपने को बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा. बैंक अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग का बैंक बैलेंस दिया नहीं है, ओपनिंग से जो ट्रांजेक्शन्स हुए वो दिए हैं, और कहीं पे भी प्रॉब्लम में लिखा नहीं है बेटा कि डेटर्स क्रेडिटर्स है बोल के, कहीं पे भी नहीं है, क्लोजिंग में भी नहीं है. इसका मतलब सब कुछ कैश में हुआ है. कैश में वो तो बैंक से हुआ है कि तो सारे बैंक के ट्रांजेक्शन है, तो एक एडिशनल वर्किंग नोट में सिर्फ अपने को ना बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो बैंक अकाउंट बना के सारे इफेक्ट्स अपने को इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे. आई थिंक रेगुलर बैच में भी अपन ने ये सम सॉल्व किया हुआ है, ये सम अपने रेगुलर बैच के मटेरियल में भी इंक्लूड किया है. ये जानबूझ के वापस से इसलिए करना है कि ये थोड़े से यूनिक सम्स है. नहीं, तुम्हारे रेगुलर बैच में नहीं था. हाँ, तुम्हारे रेगुलर बैच में नहीं था, बट अभी का जो इस बैच का जो मैंने रेगुलर बैच लिया है ना, उसमें जनवरी 2025 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए. ये बैच को, रेगुलर बैच को सिखाने में कितना टाइम लगा है? 225 घंटे लगे. 225 आवर्स, 230 घंटे. 101 लेक्चर्स हुए 1.25 घंटे के, उसमें के कुछ लेक्चर्स 3 घंटे के. 101 लेक्चर्स. ये बैच को बहुत टाइम लग गया, क्यों तो मटेरियल ही बहुत बड़ा हो गया. तुम अगर तुम्हारे बैच का मटेरियल ये कंपेयर करोगे तो बहुत फर्क है, कि तो सारे सारे एग्जाम क्वेश्चंस किए इस बैच में, और इसीलिए बच्चे इतने शांत है ना. बोलते ना बोलना सर. हाँ, चलो भाई सॉल्व करते हैं. गर्म हो रहा है ना, अब लगाना पड़ता थोड़ी देर. यहाँ का लगाऊं? सेकेंड सम, पेज नंबर 11. मेसर्स बेला वेयर trading and profit and loss account for the year ended for the year ended 31st March 2024. More than half page.
Balance sheet as at 31st March 2024. Liabilities rupees, assets rupees. हम्म, क्या बोल रहे? हम्म, 10 लाइन्स बहुत हो गए, कुछ है ही नहीं ना उसमें ज्यादा, 10 लाइन बहुत हो गए. वर्किंग नोट. बैंक अकाउंट. जस्ट फॉर 10 लाइन्स. करें स्टार्ट. Charu decided to start business of fashion garments under the name of Messrs. Bella Wear on 1st April 2023. She had a saving of about 10 lakhs. She invested 3 lakhs out of her savings and borrowed equal amount from bank. What is the entry for capital introduced by her? Bank account debit to Bella's capital account. Bank account debit side. To Bella's capital account. 3 lakh. 3 lakhs. Second effect. Balance sheet. Liability side. मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखना है. Capital. Inner column 3 lakhs. Inner column 3 lakhs. After this 5 lines blank. 5 lines blank. Borrowed equal amount from the bank. उसने equal amount बैंक से borrow की. Entry. Cash or bank account debit to loan account. To loan account 3 lakhs. 3 लाख रुपए का लोन लिया. ये लोन कहाँ आएगा? लोन inner column 3 lakhs. 1 line blank. 1 line blank. She purchased a commercial space for 5 lakhs. Entry. Building account debit to bank account. By building.
5 लाख। बिल्डिंग कहाँ आएगा? एसेट साइड में इनर कॉलम में बिल्डिंग 5 lakhs, 1 लाइन ब्लैंक। फर्दर स्पेंट 1 लाख ऑन इट्स रिनोवेशन टू मेक इट रेडी फॉर बिजनेस। 1 मिनट रुक जाओ। बाय बिल्डिंग अगेन इन बैंक कॉलम 1 लाख, एडिशनली और खर्चा किया 1 लाख रुपए का उसके ऊपर। ऊपर जहां आपने बैलेंस शीट में 5 लाख लिखा ना, उसको 6 करो, 6 लाख। टोटल 6 लाख की हो गई बिल्डिंग। मेक इट 6 lakhs। लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड बाय हर इन द फर्स्ट ईयर आर एज अंडर। टोटल कितना रीपेमेंट हुआ प्रिंसिपल अमाउंट का? 60,000। बैंक अकाउंट बाय लोन 60,000। लाइबिलिटी में आपने इनर कॉलम में लिखा हुआ है लेस रीपेमेंट 60,000, आउटर कॉलम 240। अब ये तुम लोन अकाउंट अलग से बना के भी दिखा सकते। अगर वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बनाया वैसे लोन अकाउंट बनाया तो वहां पे फिर वो रीपेमेंट दिखा देंगे। फिर डायरेक्टली नेट जो 2,40,000 का बैलेंस है वो आउटर कॉलम में दिखेगा। वो मैंने डायरेक्टली बैलेंस शीट में किया, इतना ही फर्क है। इंटरेस्ट कितना करो टोटल? 9,000 प्लस 8,550 प्लस 8,100 प्लस 7,650, 33,300। बैंक अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 33,300। P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जगह छोड़ो, फिर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 33,300। 33,300। Next, in the view of further capital requirement, she transferred 2 lakhs from her savings bank account to bank account of the business। Entry, बैंक अकाउंट डेबिट टू बेलस कैपिटल, और कैपिटल लाया उसने। टू लैक्स। गो टू बैलेंस शीट, कैपिटल में ऐड एडिशनल कैपिटल 2 lakhs। इनर कॉलम सब टोटल she paid security deposit of 7,000 for telephone connection। Entry,
security deposit to bank, to securities deposit 7,000. गाइज ये रिफंडेबल होता है डिपॉजिट, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, डेबिट किया है अपन ने सिक्योरिटी डिपॉजिट को। सो बैलेंस शीट एसेट साइड सिक्योरिटीज डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना 7,000 ना। फर्नीचर इज परचेस्ड फॉर 10,000, एंट्री furniture to bank, buy furniture 10,000, balance sheet asset side furniture 10,000, inner column one line blank, one line blank. At the end of the year her business showed the following results: total sales 20 lakh, entry कैश और बैंक टू सेल्स, क्या तो डेटा सही नहीं ना। 20 लाख, 20 लाख ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स 20 लाख, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, ये सारे पेमेंट्स है। बैंक अकाउंट में लो, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 40,000। एक काम करो तुम, पूरे ना लिख लेते एक बार, फिर एक साथ पोस्टिंग करेंगे। फिर बाय कार्टेज आउटवर्ड कितना है 60,000। बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 5,000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 15,000, बाय परचेसेस 17 lakhs, by purchases 17 lakhs, then by telephone charges 50, by traveling expenses
45,000 by maintenance. $25,000. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल, बोलता आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो पे हुए क्या, तो यहां आएगा क्या, पोस्टिंग, बोलो एंट्री, एक 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 एक। सबसे पहले क्या था अभी एक्सपेंसेस में, इलेक्ट्रिसिटी, पी एंड एल अकाउंट, इनर कॉलम कितना पे हुआ है, 40,000, 40,000 पे हुआ है ना, एड आउटस्टैंडिंग, पेएबल है ना लास्ट में दिया हुआ, वो कितना है, आउटर कॉलम 60, जो आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटी में है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 20,000, कार्टेज आउटवर्ड्स, पी एंड एल, इनवर्ड रहता तो ऊपर आता ट्रेडिंग में, आउटवर्ड है, $60,000 टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, 5,000 टू miscellaneous expenses, 15,000 परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, पहला साल है, टू परचेसेस 17 लाख, फर्स्ट ईयर है ना, टेलीफोन चार्जेस, $50,000 to traveling expenses, 45,000 to maintenance, 25,000। हो गया यहां तक। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। नाउ शी विड्रू 5,000 बाई चेक ईच मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, हर महीने को 5,000 रुपए पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स किए, मतलब साल के 60,000, 12 पंचे 60, बैंक अकाउंट बाय ड्रॉइंग्स, 60,000, सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लेस ड्रॉइंग्स 60,000, बैलेंस इन इनर कॉलम
440. Depreciation on building at the rate of 5%. Less depreciation. 30. Outer column 170. फर्नीचर पे 1000. Outer column 9000. Where to take the depreciation? P&L to depreciation. Building 30,000. Furniture 1000. Total 31,000. Closing stock in hand at the end of the year 5,50,000. Trading account by closing stock 5,50,000. Second effect, asset side stock in trade 5,50,000. अभी पहले एक काम करो बेटा, आप पहले बैंक अकाउंट क्लोज करो. यू जस्ट क्लोज द बैंक अकाउंट एंड गेट द क्लोजिंग बैंक बैलेंस. What is the total? 28 लाख. And what is the balancing figure? 89. 89,700. आ रहा है क्या सबका? कहाँ पे लेंगे इसको? बैलेंस शीट, एसेट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, बैंक बैलेंस. $89,700. चलो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो पहले.
वो ग्रॉस प्रॉफिट P&L में कैरी फॉरवर्ड करो। टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज 25,50,000। 8.5 लाख का GP, बरोबर ना? 8.5 लाख का अगर GP है तो फिर नेट प्रॉफिट 5 lakhs। हाँ, 525,000। 525,700, बरोबर। 525,700। आउटर कॉलम कैपिटल 965,700। टैली फिगर 1225, 1225,700 is the tally figure। आया? आ फटाफट यहाँ पे बैठ। तेरे को AC नहीं चाहिए ना? इधर बैठ, यहाँ पे नहीं लगता इसे। आ जल्दी आ। नहीं नहीं नहीं, अभी आ यहाँ पे। हो गया। दोनों सम्स अपने अपने तरीके से यूनिक सम्स थे, दोनों हमने सॉल्व किए। एग्जाम में दोनों में से कोई भी आए तो सॉल्व कर लोगे? पक्का? इन दोनों में से एक सम आने वाला बेटा एग्जाम में। क्यों क्या कैसे पूछने का नहीं, जितना बोलना उतना सुनने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आम खाओ गुठलियां मत गिनो। हेडिंग लिखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जिनको भरोसा नहीं है उनके पेपर में आएगा नहीं, जिनको भरोसा है उनके पेपर में आएगा। पेपर तो सबका सेम ही रहने वाला है, बट जिनको भरोसा नहीं वो ध्यान थोड़ी देंगे ना ये बात का, तो उनको थोड़ी समझेगा कि सर ने बोला वो आया। जिनको भरोसा है उनको ध्यान में आ जाएगा, अरे हाँ सर ने बोला था ये। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लिखो, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, in case of manufacturing concerns,
an additional account, an additional account called called manufacturing account, called manufacturing account is prepared is prepared separately to arrive at to arrive at to arrive at cost of production, to arrive at cost of production full stop. All costs incurred which are which are directly which are directly attributable to production activity which are directly attributable to production activity are considered are considered in manufacturing account. Are considered in manufacturing account. Full stop. The cost of production, the cost of production as arrived at as arrived at is is transferred directly is transferred directly to the to the trading account.
फुल स्टॉप। अब ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले लिए हमने सब खर्चे, वो ट्रेडिंग में फिर से लेंगे क्या? क्या यूज है फिर? राइट, अगर फिर से ट्रेडिंग में क्या को डबल थोड़ी अकाउंटिंग करेंगे? तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ढूंढने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए जरूरी नहीं है कि तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो नहीं रहा है, बट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए जरूरी हो जाता है दैट यू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेपरेटली। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप सेपरेटली ढूंढो, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। वैसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं देखा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया हुआ कहीं। अब सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो चुके हैं, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये अलग से निकल जाता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन होते हैं। बट फाइनल अकाउंट्स में इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी है इसके पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे। छोटे छोटे से जो सिंपल से क्वेश्चन है वो तो रेगुलर बैच में अपन ने किए ही। बट अभी जो प्रॉब्लम नंबर थर्ड एंड प्रॉब्लम नंबर फोर्थ अपने मटेरियल में अपन ने इंक्लूड किया है, इसमें ना बेटा बहुत डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपन बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हैव इट इन अ डिटेल्ड मैनर। तो फुल फ्लेज्ड फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी समझ में आ जाएगा। यस, लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम नंबर थर्ड। On 31st March 2024, the trial balance of Mr. Robin was as follows. Stock on 1/4/2023, raw material, work in progress, finished goods. Sundry debtors, carriages on purchases, bills receivable, wages, salaries, telephone and internet charges, repairs to office furniture, cash at bank, office furniture, repairs to plant, purchases, plant and machinery, rent, lighting, general expenses. Sundry creditors, bills payable, sale of scrap, commission received, provision for doubtful debts, capital account, sales, bank overdraft. The following additional information is available. Stock on 31st March 2024 were raw material, finished goods, work in progress. Salaries and wages unpaid for the year ended 31st March 2024 were respectively 27,000 and 60,000. Machinery is to be depreciated by 10% and office furniture by 7.5%. Provision for doubtful debts is to be maintained at the rate of 1% of sales. Rent is to be charged as to 3/4 to factory and 1/4 to office. Lighting is to be charged 2/3 to factory, 1/3 to office. Prepare manufacturing account, trading account, P&L account for the year ended 31st March 2024. बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला हुआ है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। वैसे आपने को क्या फुल फ्लेश ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट बनाना है तो बना सकते। हम्म, बना लेते, प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी। प्रॉब्लम नंबर थर्ड। पेज नंबर 12। In the books of Mr. Robin, manufacturing account
for the year ended 31st March 2024. Half page. Half page. Particulars. Amount rupees. Then after this, trading and P&L account. Trading and profit and loss account. For the year ended 31st March 2024 है ना. Half page. Balance sheet. As at 31st March 2024. Ten lines. Rest at. On 31st March 2024, trial balance of Mr. Robin was as follows. Opening stock. ओपनिंग स्टॉक में अगर आप केयरफुली देखोगे तो बाइफर्केशन दिया हुआ है. क्या बाइफर्केशन है? रॉ मटेरियल, देन
वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. टेक योर ओन टाइम गाइज. पहले का आंसर याद करके मत आंसर दो, थोड़ा दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ लॉजिकली स्पीकिंग कहाँ पे क्या आना चाहिए इसमें से, दिए हुए में से. जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो कहाँ आएगा? हम्म, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा. व्हाट अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस? वो भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आना चाहिए ऑब्वियसली, कि तो वो आधे अधूरे रेडी गुड्स थे. फिनिश्ड गुड्स, अब साल के बिगिनिंग में जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है वो तो रेडी था ना, फिर वो इस साल मैन्युफैक्चर हुआ क्या, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा क्या? वो कहाँ जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए. गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक. अंडर दैट रॉ मटेरियल, कितना? 6,30,000. देन WIP 2,85,000. finished goods trading account, to opening stock of finished goods. बोलो बेटा. 4,65,000, 4,65,000. sundry debtors, debtors asset side inner column, कितना? 7,20,000 इनर कॉलम में एक लाइन ब्लैंक. कैरेज ऑन परचेसेस किधर? हाँ, कैरेज ऑन परचेसेस, परचेस काय का हुआ रहेगा? रॉ मटेरियल का. तो रॉ मटेरियल का खर्चा कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ना. टू कैरेज ऑन परचेसेस, बोलो बेटा. 40 बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड कितना? 4,50,000, 4.5 लाख. आया? फिर वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इनर कॉलम में लेना, क्यों तो आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट भी है. 3,90,000. वन लाइन ब्लैंक. सैलरीज P&L अकाउंट, बोलो. इनर कॉलम के तो उसमें भी आउटस्टैंडिंग है. कितना? 3 lakhs.
3 lakhs ना, 1 line blank. टेलीफोन एंड इंटरनेट वहीं पे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नीचे है क्या? नहीं है. 30,000. रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर स्पेसिफिक लिखा है बेटा, कहाँ पे आएगा? P&L. ऑफिस फर्नीचर है ना. कितना? कैश एट बैंक. पाँच 10,000. 5,10,000. फर्नीचर इनर कॉलम 3 lakhs. 1 line blank फॉर डिप्रिसिएशन. एक मिनट, डिप्रिसिएशन है ना? हाँ है. फिर रिपेयर्स टू प्लांट कहाँ लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग. कितना है वो? 33,33,000. परचेसेस वहीं पे. नहीं नहीं, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में. परचेसेस 25,50,000. प्लांट एंड मशीनरी. एसेट साइड इनर कॉलम कितना? 21 लाख. रेंट को लेके बेटा नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है. रेंट का वो बोल रहे हैं 3/4 फैक्ट्री को, 1/4 ऑफिस को. सो मैन्युफैक्चरिंग में टू रेंट 3/4 कितना आता है? फैक्ट्री का रेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा 1 लाख, 1,35,000. और जो 1/4 है वो ऑफिस को चार्ज करना है, वो P&L में कितना? 40. समझ रहा क्या क्या कर रहे हैं? लाइटिंग सेम. मैन्युफैक्चरिंग में कितना जाएगा लाइटिंग? 2/3. 27,000. P&L में टू लाइटिंग 13,000. जनरल एक्सपेंसेस किधर? हम्म 45,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स. लाइबिलिटी में कैपिटल के लिए और प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो क्रेडिटर्स कितने? 450. बिल्स पेएबल 225. सेल ऑफ स्क्रैप. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
स्क्रैप बोल के जो बेचे उतना अपना कॉस्ट रिकवर हो गया बाय सेल ऑफ स्क्रैप। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट की रिकवरी है ये 75,000। कमीशन रिसीव्ड, पी एंड एल क्रेडिट साइड जीपी के लिए एक लाइन छोड़ो, बाय कमीशन हाउ मच 13,500। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पेंडिंग रखो, देखते क्या करने का है, पेंडिंग रखो इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैपिटल, लाइबिलिटी साइड कैपिटल इनर कॉलम 30 lakhs, वन लाइन ब्लैंक। सेल्स किधर, ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स 50 लाख 16,000, 50 lakhs 16,000। बैंक ओडी, लाइबिलिटी 2,55,000। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्लोजिंग स्टॉक सही है, गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ कौन सा लेंगे, और रॉ मटेरियल का कितना है 4,86,000। और वर्क इन प्रोग्रेस 234। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लेने का, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। बताओ 543,000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड बताओ, रॉ मटेरियल 4,86,000, 2,34,000, 5,43,000। Salaries and wages unpaid were 27,000 and 60,000। P&L में सैलरीज में एड आउटस्टैंडिंग बोलो 20, आउटर कॉलम 3 लाख। सिमिलरली वेजेस में एड आउटस्टैंडिंग बोलो
60 ना, आउटर कॉलम 4.5 लाख. Outstanding expenses, salaries 27,000, wages 60,000. Machinery is to be depreciated by 10%. Asset side less depreciation. 2 lakh. Outer column 18 lakhs 90,000. Furniture by 7.5%. बोलो. 22,500. आउटर कॉलम 277,500. बेटा प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन कहाँ आएगा ना. प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग. टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. बताओ. 2,10,000. देन फर्नीचर का P&L अकाउंट में टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. Hmm, 22,500. फिर provision for doubtful debts is to be maintained at 1% of sales. Go to balance sheet less provision. 1% of sales बोला है बेटा, सेल्स. 50,16,000 इंटू 1%, 5160. बोलो. 669. अब आप मेरे को बताओ ओल्ड आरडीडी कितना था तुम्हारे पास, 49. और अभी तुमको और कितना चाहिए, 5160 चाहिए. तो 49,500 था, 5160 चाहिए, तो कितना इंक्रीमेंटल करना पड़ेगा. 660 रुपीज. 660 रुपीज. गो टू P&L अकाउंट. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. इनर कॉलम 50,000 160 less old provision 49,500.
हो गया? टू RDD कितना था पहले का? अपने को कितना चाहिए था? 50, 160 लेस ओल्ड RDD कितने थे? 49, आउटर कॉलम 660 हो गया। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, close manufacturing account, you will get cost of goods produced, cost of production transferred to trading account. $35 lakhs, 70,000 बरोबर. ट्रेडिंग अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $35 lakhs, 70,000 to gross profit. $15,24,000 का ग्रॉस प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट कितना रे? 1043, 340 आया सबका. एड नेट प्रॉफिट add net profit 1043, 340.
आउटर कॉलम 40, 43, 340, और अगर करेक्ट सॉल्व हुआ है तो टैली होना चाहिए। फिफ्टी, 60 दोनों साइड टैली हुए, एक साइड का टोटल लिख दिया दूसरी साइड पे, टैली हुआ 50, 60, 340। एनी प्रॉब्लम गाइज? लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, फोर्थ। वो तो जाना चाहिए, लगता तो हो जाएगा, कर लेंगे ना, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं तो, आपको करना ही है अपने को। Following is the trial balance of Mr. Samuel for the year ended 31st March 2024. Trial balance as on 31st March 2024. Capital, sundry creditors, purchase returns, loan from Mr. Sahil, provision for bad and doubtful debts, sales, bank overdraft, opening stock, raw material, finished goods, purchase of raw material. Land, building, loose tools, plant and machinery, investments, cash in hand, cash in bank, furniture fixtures, sundry debtors, drawings, salaries, coal and fuel, factory rent, general expenses, sales return, bad debts, direct wages, factory, power, interest paid on bank overdraft, carriage inward, carriage outward. Additional information, stock of raw material and finished goods at the end of the year was 5 lakhs and 437,500 respectively. A provision for doubtful debts at 5% on sundry debtors. Depreciate building by 10%, plant and machinery by 15%, furniture and fixtures by 10%. 1 month factory rent is outstanding. Interest has accrued on investments and rate of interest is 10%. Interest on loan from Mr. Sahil is payable 12%. Loan was taken on 1st October. You are required to prepare manufacturing account, trading account, P&L account and balance sheet. Problem number 4th, page number 13. In the books of Mr. Samuel, first we will prepare manufacturing account for the year ended 31st March 2024. Particulars rupees, particulars rupees.
10-12 lines, half page. Trading and profit and loss account. For the year ended 31st March 2024. More than half page. Balance sheet as at 31st March 2024. Ready? Online guys, ready? करूँ start? बताओ क्या क्या है? Capital. Go to balance sheet. Capital. Inner column 9,50,000. Keep 3 lines blank. Creditors वहीं पे. Creditors are 3,25,000. Purchase returns. What do we do with purchase returns? We deduct from purchases. Manufacturing account. रुक जाओ, ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा पहले अपने को. एक काम करते हैं ना, पेंडिंग रहने दो,
परचेसेस लिखेंगे तो लिस्ट कर देंगे. लोन फ्रॉम मिस्टर साहिल, लाइबिलिटी. लोन फ्रॉम मिस्टर साहिल 4 lakhs. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वेट एंड में करेंगे अपने इसका जो भी करना है. सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स रिटर्न है क्या, चेक करो सिर्फ. है क्या. फिर इनर कॉलम में 44 lakhs 20,000, वन लाइन ब्लैंक. बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट 6 lakhs. ओपनिंग स्टॉक दो है बेटा, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स. कौन सा कहाँ आएगा. रॉ मटेरियल का आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स 34 lakhs. सॉरी 250. वेयर टू टेक फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक. टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स बोलो. 4 lakhs 4,25,000. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, टू परचेसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इनर कॉलम में 34 lakhs. और यहां से वो रिटर्न्स लेस करो ऊपर जो पेंडिंग रखे थे अपन. बोलो बेटा कितने थे वो. 50,000. आउटर कॉलम 33 lakhs 50,000. 33 lakhs 50,000. लैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड डायरेक्टली आउटर कॉलम, बिकॉज लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं आता, इट इज नॉन डिप्रिसिएबल एसेट. कितना है. 50,000. बिल्डिंग इनर कॉलम बोलो. 6 lakhs, वन लाइन ब्लैंक. देन लूज टूल्स. लूज टूल्स पे डिप्रिसिएशन नहीं दिया ना, कि दिया है. नहीं है ना. डायरेक्टली आउटर कॉलम 1.5 लाख. प्लांट एंड मशीनरी वहीं पे एसेट साइड में इनर कॉलम बताओ. 3 lakhs. वन लाइन ब्लैंक. इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड 2,50,000. कैश इन हैंड
कितना? 15,500. कैश एट बैंक 43,500. फर्नीचर एंड फिक्चर्स इनर कॉलम 1,25. वन लाइन ब्लैंक. सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम बोलो. 2 लाख 375. एक लाइन ब्लैंक. ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस करो. हाउ मच? इनर कॉलम में ही बैलेंस 890. Then salaries, P&L account, 2 salaries, कितना? कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं. 90,000. कोल एंड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 1,05,000. फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. इनर कॉलम 1 लाइन ब्लैंक. जनरल एक्सपेंसेस कितना? 39. सेल्स रिटर्न्स 50. आउटर कॉलम 44, 43, 55,000, 65, 43, 65,000. Bad dates, P&L 15,000. डायरेक्ट वेजेस किधर? वन लाख. पावर वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग में 80. इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट किधर? P&L to interest on बैंक ओवरड्राफ्ट 90. 90,000.
कैरेज इनवर्ड किधर? मैन्युफैक्चरिंग। थर्टी। कैरेज आउटवर्ड P&L, P&L। $25,000 बराबर। Stock of raw material and finished goods at the end of the year was 5 lakhs and 437,500 respectively. Raw material का closing stock कहाँ लेंगे अपन? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल्स 5 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स 4 लाख 437। Second effect of closing stock, balance sheet, asset side, stock in trade, raw material, $5 लाख and finished goods बोलो 4,37,500। Provision of doubtful debts at 5% on debtors लेस RDD debtors में से 5%। 18,000 आउटर कॉलम 356 250। अभी 18,750 का क्लोजिंग RDD है। ओपनिंग कितना है अपने पास? 25,000 है, ज्यादा है। कहाँ पे लूं? P&L के क्रेडिट में एक लाइन ब्लैंक छोड़ो बाय ओल्ड RDD 25,000। समझा नहीं है? लेस न्यू RDD। कम चाहिए प्रोविजन अपने को तो रिवर्स करेंगे प्रोविजन जो एक्सेस है वो 18,750 आउटर कॉलम 6250। एक्स्ट्रा प्रोविजन थी वो रिवर्स कर दी हमने। 25,000 की प्रोविजन थी जबकि चाहिए मुझे सिर्फ 18,750। Depreciate building at the rate of 10%, plant and machinery at the rate of 15%, and furniture and fixtures at 10%. Building less depreciation 10% बोला तो 60,000। आउटर कॉलम 5 लाख प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है ना, 45,000। आउटर कॉलम 2,55,000। फर्नीचर पे लेस डेप्रिसिएशन 12,500। 1,12,500। कौन सा डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा?
प्लांट एंड मशीनरी का आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड कितना 45। पी एंड एल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना 60। फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना 17। आउटर कॉलम 72। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन नहीं 1 मंथ फैक्ट्री रेंट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब जो फैक्ट्री रेंट पे हुआ है वो 11 महीने का है। 11 महीने का 77,000 बोला तो पर मंथ 7,000 तो उतना आउटस्टैंडिंग है। एड आउटस्टैंडिंग कितना 7,000। आउटर कॉलम सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 7,000। Interest has accrued on investment and rate of interest is 10% per annum. इन्वेस्टमेंट 2,50,000 है, 10%। कब की है इन्वेस्टमेंट, कुछ दिया है क्या? वो तो बिगिनिंग से ही है, फिर कुछ नहीं दिया तो 2.5 लाख पे 10%, 25,000 रुपये। पी एंड एल अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000। सेकेंड इफेक्ट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एसेट साइड में 25,000। Interest on loan from Mr. Sahil is payable at the rate of 12% per annum. The loan was taken on 1st October 2023। 1 अक्टूबर को लोन लिया था, मतलब 6 महीने का ही लोन है। 4 लाख पे 12% 6 महीने के लिए 24,000। गो टू पी एंड एल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20। सेकेंड इफेक्ट liability side outstanding interest on loan 24,000। सबका हो गया यहां तक। पहले बेटा केयरफुली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट ढूंढो।
by cost of production transferred to trading account. Forty lakhs 64,000 is the total cost of production. 3564 बरोबर है. $48,02,500 ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल. आठ तेरह 500. 8 13 500 जीपी 8,13,500. P&L टोटल 844. सब लोग इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करो बेटा अपना अपना. और 89 250 is the net profit. कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करो. टोटल कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट 1379 250. टैली फिगर हो गया. टैली वाह. देखो वैसे देखा जाए तो चारों भी सम्स बड़े बड़े थे, बट अगर अपन फोकस के साथ सिंसियरली करें तो देखो टाइमली सब हो जाता है. मेरे को आई हैड माई डाउट्स कि आज कंप्लीट होगा क्या. मेरे को लगा था कि आखिरी का सम कल जाएगा, बट फोकस्ड एफर्ट्स डालते तो होता है. कंक्लूजन यही है. सर आरडीडी बताओ एक बार. हाँ देखो, ओपनिंग आरडीडी अपने पास 25,000 का बैलेंस दिया हुआ है प्रॉब्लम में. ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आया हुआ.
और अभी साल के एंड में अपने को डेटस पे 5% आरडीडी मेंटेन करो बोला है। तो क्लोजिंग डेटस पे 5% कैलकुलेट किया तो आता है 18,750। बोल तो अपने को सिर्फ 18,750 का ही प्रोविजन चाहिए, बट अपने पास ओपनिंग का 25,000 का प्रोविजन है, तो एक्सेस प्रोविजन हो गया। तो जो एक्सेस प्रोविजन है 6,250, वो एक्सेस प्रोविजन पी एंड एल के क्रेडिट में लेके रिवर्स हो गया। सो वी रिवर्स दैट एक्सेस प्रोविजन ऑफ 6250। समझा रत्नेश? ओके सर नहीं रे, समझा क्या? ओके बोल तो हाँ ठीक है तुम बोल रहे बोल के, ऐसा नहीं, समझा क्या? हाँ। ओजेएस सीरियसली कर रहा है ना बेटा? हाँ। तो कल अपन मिलेंगे 9 बजे। 9 बजे, 9 बजे कोई बात नहीं, 9 बजे आप। थोड़ा माहौल बना के रखा, 8 साढ़े 8 तो अचानक से 9 बोल दिया तो फिर और आधा घंटा सोने को मिलेगा, इसकी खुशी अलग रहती है ना। 9 बजे। हम्म। नहीं अब 9 का 9:30 मत कराओ है, 9 बजे मिलते हैं। कल अपने को पार्टनरशिप लेना है। पहले पार्टनरशिप कंप्लीट करते फिर सिंगल एंट्री एनपीओ में जाते। हम्म। फर्स्ट वी विल कंप्लीट पार्टनरशिप, सो टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को 2 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे, मेरे हिसाब से 2 में नहीं होगा, थर्ड भी लग सकता है, क्यों तो पिसमील, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड और वो सब कराना है ना। हाँ। दो 2 लेक्चर में शायद ही होगा, 3 लेक्चर लगेंगे, कल परसों नरसों, संडे मंडे ट्यूसडे 3 लेक्चर लगने चाहिए। लेट्स सी। चलो सी यू टुमारो गाइज, बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय, हैप्पी रक्षाबंधन।